Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, living and non-living things. Learning objectives, the differences between living and non-living things, the similarities between living and non-living things. I'm sure you all know about living and non-living things. In this chapter, we will about the differences and the similarities between them. So here is the activity. You will do it yourself. Look around. You will see many things. There are human beings, plants and animals. There are toys, vehicles, books, furniture, buildings, the sun, the moon, stars, mountains, air and water. Some of these are big, some are small, some are hard, some are soft. Some are living things while others are non-living things. The sun, moon, stars, mountains, rocks, sand, soil, air and water are non-living things. These are present in nature, so these are natural, non-living things. Every day, we see lots of things around us. Some of them are big, some of them are small. Some of them are furniture, buildings, toys, or some of them are plants and animals or human beings. कुछ लिविंग होते हैं तो कुछ आपके नॉन लिविंग होते हैं. जैसे आपकी कुछ सब्सटेंस है लाइक आपका सन, मून, स्टार, माउंटेन्स, ये सारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं. बट ये क्योंकि नेचुरली पाए जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. बुक्स, फर्नीचर्स, टॉयज, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स also non-living things, but these are not found in nature. Humans make them. So these are man-made non-living things. Human beings, plants and animals are living things. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें सारे ये भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, इन्हें मैन बनाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. एंड यू नो लिविंग थिंग्स आपके कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाउ आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट? Living things are very different from non-living things. Let us learn how. Living things need food. Living things need food to grow as food provides them energy. When living things need food, they feel hungry. But non-living things do not need food. Humans and animals depend directly or indirectly on plants for food while plants make their own food. सबसे पहले living things को food की ज़रूरत होती है because they need to grow. They need to get energy to do different kind of activities. But non-living things do not need food. Living things move. Living things can move from one place to another. They move in search of food, shelter, and to protect themselves from their enemies. Animals like tigers and cows move with the help of their legs. Birds and insects fly. Dogs and cats walk. Fish swim with the help of their fins and tails. Snakes crawl from one place to another. You know that living things move from one place to another in search of many things, in search of shelter or in search of food or to protect from their enemies. And movement के लिए सारे जो आपके living things हैं वो different movement show करते हैं. जैसे कि आपके कुछ animals होते हैं जो walk करते हैं, कुछ crawl करते हैं, right? कुछ swim करते हैं, right? Fact file: plants do not move around because most of them make their food with the help of air, water and sunlight. आपके plants move क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना? किसकी help से? Air, water and sunlight. These animals move because they have life. Have you ever seen a plant moving from one place to another? ये animals move करते हैं because इनपे life है. क्या plants भी move करते हैं? क्या आपने देखा है कभी? Plants are living things, but they do not move from one place to another because most of them can make their food themselves. However, different parts of a plant can show movement. A sunflower bird turns to face the sun. देखिए plants एक जगह से दूसरी जगह तो move नहीं करते हैं, but plants के different parts जो हैं वो ज़रूर movement show करते हैं. For example, sunlight वो हमेशा sun की तरफ turn कर लेता है. Leaves of a touch me not plant. Touch me not plant is also known as mimosa plant. Show movement when they are touched by someone or something. On the other hand, non-living things like buses and houses never move on their own. आपका टच मी नॉट प्लांट जैसे मिमोसा प्लांट भी बोला जाता है, आप उसकी लीव्स को टच करेंगे तो वो अपने आप को क्लोज कर लेता है. दैट मीन्स वो मूवमेंट शो करता है. बट ऑन द अदर हैंड आपकी बसेस या हाउसेज हैं, क्या अपने आप से वो मूव करेंगे? बिल्कुल नहीं. लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. दे आर बर्न, बिकम एन एडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई. नॉन लिविंग थिंग्स लाइफ फॉर एवर एंड दे डू नॉट ग्रो ओल्ड. लिविंग थिंग्स की ना एक लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ स्पेन होता है, कितने टाइम तक वो रहेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली दे विल डाई. बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसे नहीं होता. जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, बेबी बॉय से वो बॉय बनता है, देन मैन एंड देन वुड. चलिए एक्टिविटी देखते हैं. पुट अ सीड इन द सॉइल, वाटर डेली,
After a few days, a small plant comes out. This shows there is growth and changes in plants because they are living things. आप एक सीड लेंगे, सॉइल में डालेंगे वैसे, एंड देन आप उसमें थोड़े दिनों के बाद देखेंगे, बट उसको वाटर भी करना है डेली, थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि आप उसमें से एक प्लांट निकल आया। तो ऐसा क्यों हुआ है? और उसके बाद टाइम के साथ ग्रेजुअली इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स। Non-living things stay the same and do not grow. A table or a computer do not have a life cycle as they do not grow. आपने कभी टेबल या कंप्यूटर या अपने टॉयज को ग्रो करते हुए देखा है? नहीं. Big why? All these things are non-living things. Living things breathe. All living things need air to breathe. Humans and animals breathe in oxygen gas and breathe out carbon dioxide gas. Oxygen breathe in करते हैं and carbon dioxide को exhale करते हैं. Human beings breathe through their lungs. Insects breathe through tiny holes in their body. A fish breathes through its gills. Frogs breathe through both skin and lungs. Cockroaches, butterflies and mosquitoes breathe through air holes in their body. अब जितने भी लिविंग थिंग है सब ब्रीथ करते हैं एंड इसके लिए उनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे ह्यूमंस या फिर कुछ एनिमल्स हैं वो लंग्स का यूज़ करते हैं. इंसेक्ट उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पायरकल्स भी कहा जाता है, वहाँ से ब्रीथ करता है. फिश यू नो दैट गिल से ब्रीथ करती है. इसी तरह से फ्रॉग जो है अपनी स्किन एंड लंग्स दोनों से ही ब्रीथ करता है, राइट. एंड आपके कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोचेस एंड मस्कीटोज, इनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं, तो ये इसके थ्रू आपके ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ. दे ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. These are present on the lower surface of the leaf. Non-living things do not breathe. Your teddy bear or doll will not get suffocated if you block their nose. Hold your breath for a few seconds. Can you hold for longer? No, you can't hold your breath. You have to breathe to live. Plants भी आपके breathe करते हैं, आपको मालूम है. वो के लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही टाइनी पोर्स जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, एंड इसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. आप अपनी डॉल या टेडी बेयर लीजिए और उनके नोज़ को ब्लॉक करेंगे, क्या वो सफोकेट होंगे? बिल्कुल नहीं. लेकिन क्या आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. Living things feel. Living things feel and react to changes around them. They react to light, touch, heat, cold, and sound. You can feel pain if someone pinches you. You can also feel whether an object is hot or cold, soft or hard, smooth or rough by touching it. You can feel the presence of someone from their voice by seeing them or by touching them. Living things feel करते हैं. उनके आसपास होने वाले चेंजेस की तरफ वो रिएक्ट भी करते हैं. अगर आप कोई पिंच करता है तो आपको पेन फील होगा, ऑफ कोर्स होगा. इसी तरह से आप कोई भी चीज़ हॉट है, कोल्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट, यू कैन फील इट बाय टचिंग इट. Plants too feel changes in the surrounding. Many plants shed their leaves in autumn and bear flowers in the spring season. These are the plants' response to the changing seasons. Non-living things do not respond to change in the surrounding. This is because they cannot sense or feel any changes. Plants भी चेंजेस फील करते हैं अपने सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल ऑटम्स में क्या होता है कि प्लांट्स अपने लीव्स को शेड करते हैं, एंड स्प्रिंग सीजन में उनसे नए प्लांट्स आते हैं, नई लीव्स आती हैं, नए फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, राइट. बट नॉन लिविंग थिंग जो है वो उनके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड ईदर बाय गिविंग बर्थ और बाय लेइंग एग्स. यंग वंस का मतलब होता है बेबीज, एंड लिविंग थिंग्स जो है वो अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं या तो by giving birth or by laying eggs. Human beings, monkeys, cows, goats, giraffes, elephants and rabbits give birth to babies. Animals like crocodiles, snakes, tortoises, birds and lizards lay eggs. Most plants give rise to new plants with the help of seed. A seed grows into a seedling and later in a big plant. A mango seed grows into a mango tree and an apple seed grows into an apple tree. In some plants, the stems, roots and leaves can also produce new plants. Have you ever seen small plants growing from potatoes and onions at home? Potatoes and onions are stems from which new plants grow. अब आपके जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड की हेल्प से. सीड से एक नया प्लांट आपका बनता है, जैसे कि मैंगो सीड से आपका मैंगो ट्री बनेगा, एप्पल सीड से आपका एप्पल ट्री बनेगा, राइट. और इसी तरह से आपने अपने घर में नोटिस किया होगा पोटैटोज या अनियंस होते हैं, उनमें से कुछ एक स्टेम से निकल रही होती है. आपने कभी नोटिस किया है? Have you ever seen a table reproduce a new baby table? No, because non-living things cannot reproduce. अब एक टेबल जो है क्या वो न्यू बेबी टेबल को रिप्रोड्यूस कर सकती? बिल्कुल नहीं, because it is a non-living thing. Living things die. All the living things die someday. Living things that are no more alive are called dead things. For example, wood is a dead thing because it was once a part of a living thing. Non-living things cannot die because they were never alive.
अच्छा, जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, एक ना एक दिन दे विल डाई, उनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, लाइफ के इतने साल तक वो रहेंगे, एंड उसके बाद आपका क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसके बाद वो नहीं जिंदा रहते, तो वो डेड थिंग्स हो जाती हैं। जैसे वुड आपका एक डेड थिंग है, बट एक टाइम पे वो लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करता था। वो किसका पार्ट हुआ करता था? प्लांट का। नॉन लिविंग थिंग्स आपके डाई नहीं करते बिकॉज वो कभी जिंदा थे ही नहीं। फैक्ट 5, प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यंग वंस को प्रोड्यूस करना जो है आपका प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हाउ आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सिमिलर? अभी हमने बात की डिफरेंसेस की, नाउ हाउ आर दीज सिमिलर? लेट्स चेक इट आउट. Living things and non-living things are made up of matter. The body of humans and animals is made up of skin, bones and organs, and a table or a chair is made up of plastic or wood. सबसे पहली similarity है, चाहे living thing है चाहे non-living things है, all are made up of matter. Living and non-living things occupy space and have weight. An elephant occupies a space and has weight, and a car also occupies a space and has weight. क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आपके दोनों मैटर से बने होते हैं, दैट मीन्स वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करेंगे एंड उनमें वेट भी होगा. Weather conditions affect living and non-living things in the same way as heat, cold or rain affects our skin. They also affect wood or a building. देखिए, वेदर कंडीशंस में जैसे हीट, कोल्ड, रेन हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं, सेम ही वो वुड को भी अफेक्ट करेंगे विच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, बिल्डिंग को भी अफेक्ट करेंगे विच इज़ ऑल्सो अ non-living thing. Summary: human beings, plants and animals are all living things. The sun, the moon, stars, mountains, air and water are natural non-living things. Toys, vehicles, books, furniture and buildings are man-made non-living things. Living things move, grow, need food, breathe, feel changes, reproduce, grow old and die. Non-living things do not move, grow, breathe, need food, feel or reproduce. Living things and non-living things are made up of matter. They occupy space, have weight and weather affect. चिल्ड्रन, आई होप आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस और उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ का पता चला होगा. एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.